Okay, so here was the solution. We have discussed this earlier. Just a flash of that solution. So the next problem which we are going to discuss is calculation of the compound interest. So normally in quiz or in assignment or in assessments, you will see such type of questions. So in such type of questions, you have to extract the input, process the input, and of course get the output of required output of that particular problem. So if you just start this problem and extract the data which we actually want to compute, we have to solve it using for repetition structure. We are discussing for repetition structure. So a person invests ₹1,000 in a savings account giving 5% interest. ये लैपटॉप जरा क्लोज कर दो. If you are late arrival, we can go to the lab. So assuming that all interest is left on deposit in the account, means this was the initial deposit. 5% is the interest rate. No debit or credit in the account. All the interest is left on the deposit in the account. Calculate and print the amount of money in the account at the end of each year for 10 years. In 10 years के लिए for account balance at the end of nth year 1, 2, 3 up till 10 आपने बताना. For example, year is 1, amount is this much. 2, ये टेबल बनाना. ये हमारा टास्क है यूजिंग फॉर लूप. ऑफ कोर्स formula is given to us. A equals to P into 1 plus R raised to the power n. So what is P? What is the value of P? 1000. P is the original amount, which is 1000. What is the value of R? 5%. If I am talking about year number 5, what should be the value of n? Nth year. And A, amount of deposit at the end of nth year, whatever the value of this is A. So we have to implement this formula using for. तो सबसे पहले तो आप ये देख लें, अमाउंट is A. Amount is A. P is for principal. जो हमने लास्ट टाइम रेट में लिखा था. A equals to क्या फॉर्मूला था जी? P into 1 plus R raised to the power. So we have to implement this. Amount is A, principal is P, is R is the rate 0.05. वो भी देखें, हम खुद उसको मल्टीप्लाई करते हैं या कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं. पावर फंक्शन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पावर फंक्शन इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, इजंट इट? किस मैथ्स की लाइब्रेरी में पावर फंक्शन अवेलेबल है जी? किसी ने जाके देखे? सी मैथ और maths.h. अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे आपके पास पावर फंक्शन आ जाएगा. बट बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटिंग द फार्मूला एंड इट्स रिजल्ट, लेट अस अज्यूम इन विच फॉर्म वी वांट टू हैव द आउटपुट. वी वांट टू हैव द आउटपुट इन दिस फॉर्म एंड देन वी विल रिवर्स इंजीनियर द कोड. हमें ये आउटपुट चाहिए थी. बाय द एंड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस कोड यू विल बी computing the amount by the end of each year in a tabular format. We are also learning how to manipulate the output in a tabulation format. टेबल की फॉर्म में आपने किस तरह डिस्प्ले करना है अपना क्वांटिटी, वो हम इधर
this program that we are also going to learn. So first of all, there are couple of headings, year and amount. At the top आप देख सकते हैं year, amount and deposit. Line number 25. Without going to any loop, first of all, just quote the headings. See out, double quotes, year. So we have heading as year. Now we want to give some space before writing the next heading. बात नहीं करेंगे. So we are continuously talking. Set width. Set W is the function which will give us the space, and its input is totally hit and try. अगर आप समझते हैं स्पेस ज़्यादा होगी या वैल्यू कम कर, अगर आप समझते हैं कम है स्पेस, वैल्यू ज़्यादा कर, 2-3 स्पेस दे देता है. सेट W 21 कैरेक्टर्स की स्पेस आई, सी आउट के साथ हम यूज करते हैं. We always utilize set W in C out, and it is available in the same IO manip header file. What function we have discussed about this file earlier? Set precision. That's right. Set precision and set width. Set W, set width. उसके बाद afterwards we have given the heading amount on deposit. We want this heading to be displayed after every year. Of course, we want it to display it once at the top. So now next comes set precision. Again, अभी आपने कोट किया कि set precision हमने क्यों यूज किया था? If anybody can recall, decimal precision. कितने नंबर आने चाहिए? Rounded to fit precision. ताकि वो पूरा string of numbers ना आए 2.3333335. It should be rounded off to some certain value after the decimal point. So we have set that as well. Headings are set. The content which will be displayed, its precision is also set. Now just start the loop. ये सेंसर वैल्यू प्रॉब्लम है या काउंटर कंट्रोल प्रॉब्लम है? क्यों क्यों जी? सबको पता है ये चीज. इट्स अ काउंटर कंट्रोल प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव टू प्रोसेस इट फॉर 10 years. तो लूपिंग वेरिएबल कौन सा होगा फिर? फॉर है, वाइल है, डू वाइल है. उसके अंदर जो लूपिंग वेरिएबल है जिस पे कंडीशन लगनी है, year will start from 1 and we will go till the time it's less than equal to 10. So same is the case over here. Line number 31. For int year equals to 1, year is less than equal to 10, year plus plus. Bracket start at line number 31 and its body continues till line number 40. अगर for loop true हो गई तो ये सब कुछ चलेगा for each year. Now what is happening inside? For the very first year, the value of year is 1. Year is 1 is less than equal to 10. True. Now what is the next step? 40. ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो. Afterwards, year increment. फर्स्ट ईयर की बात हो रही है जी. तो पहले तो कैलकुलेट कर लेना है, फार्मूला कैलकुलेट कर लेना फॉर दिस ईयर. यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड. Yes. राइट साइड, सॉरी ऑन द राइट साइड. लेफ्ट साइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी. अमाउंट की राइट साइड पे हमारे पास हर चीज अवेलेबल है. प्रिंसिपल की वैल्यू है, रेट की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एन क्या है? इसको देखते हैं. एन इज हियर. एट द मोमेंट इट्स 1. Amount equals to, just have a look at the formula. A equals to P into 1 plus R raised to the power n. Powerful.
2,3 किसको इक्वेट करता है ये? बेस रेस टू द पावर, बेस की कॉमा के साथ सेपरेटेड है, तो 1 प्लस रेट को हमने बेस बनाया, रेस टू द पावर here, the value of here is, so this is how we are going to implement semi-column. Compute हो गया for the first year, value of amount. Now just display the values. Set W4 for space दी क्या value display होगी? क्या value है? 1. और इधर value जो भी amount जिस वक्त compute हुई वो display. Can anyone tell me why set W4 exactly? Why set W4? Because here ठीक है, ईयर में कैरेक्टर कितने? ताकि ये अलाइन 1 R के नीचे आए. Just have a look at the output. Set W4 इसलिए किया ताकि टेबुलेशन फॉर्म में वो चीज डिस्प्ले हो. ठीक है जी, पावर वाला देख लेते हैं, इसको हमने करना ही है क्योंकि यही इसमें कैच है पावर की इम्प्लीमेंटेशन में. तो हमें ये इम्प्लीमेंट करना है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R. 1 प्लस R को हम देखेंगे इस जगह 1 प्लस रेट कॉमा रेस टू द पावर क्या है? n को हमने स्कोर आप भी कहेंगे ये आप देखिए इसको जस्ट नेम इट n कॉमा ये जो वो इधर रखिए. तो 1 प्लस R कॉमा 1 प्लस रेट कॉमा क्लियर हो गई सबको. प्रिंसिपल इनटू दिस, प्रिंसिपल आपकी अमाउंट है 1000, फर्स्ट ईयर के लिए कंप्यूट हो चुकी है, स्पेस देके अमाउंट भी डिस्प्ले हो चुकी है. Now what is the next step? जी हो गया है, बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है, लूप दोबारा चलेगी मगर उससे पहले एक चीज होगी. सेकेंड ईयर तो करें ना, सेकेंड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर नंबर 2. First year amount, second year amount is still pending. True or false? True. Amount equals to principal into सब कुछ वही है. Principal into power of 1 plus rate static. Raised to the power 2. It will be computed. It will be displayed accordingly. The value of latest value of the year is 2 and the amount plus year 3 and the amount continues 9. अमाउंट. अच्छा 10 किस तरह डिस्प्ले हो गया? सेट W4 ईयर, द वैल्यू ऑफ ईयर इज 10. किस तरह हो गया जी? नो because it's aligned, you have used set W, it will display 0 over here and 1 over here, so it keep the alignment. What will happen? So it will keep on filling this gap first. If the value becomes bigger, ये पहले गैप को फिल करेगा, ये जो 4 स्पेसेस हैं आपकी ईयर की, afterwards it will go. ये आप इसे भी आउटपुट एंड when the value of year becomes 11, अब ये लूप ब्रेक हो जाए. Same task can definitely be done with while loop, do while loop, isn't it? क्यों जी, ये क्लियर हुई बात? हाँ जी, प्रोग्राम देख लें. ये टेबुलेशन फॉर्मेट में इन दिस प्रोग्राम वी हैव लर्न हाउ टू यूज फॉर लूप, हाउ टू यूज पावर फंक्शन, हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्मेट, मेनी थिंग्स. Set width is just a hit and trial function. It is used to give spaces. Set width 4 means 4 spaces. Set width 21 means 21 character spaces. If you think it is the output is going right or left,
adjust it accordingly. सही अपनी बात कैलकुलेशन छोड़ेगा ये years के चार को भी ऐड करके हाँ, उसके आगे पर उसमें जाएगा जी, ठीक है। तो इस तरह अगेन हिट एंड ट्रायल, अभी भी आप समझते हैं एडजस्ट नहीं हुआ, उसको 31 पे पहुंचा दो, वो आगे चला जाएगा एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। सो इसमें देखिए जस्टिफिकेशन भी है, प्रिसीजन भी है, टेबुलेशन भी है, रेपिटेशन भी है, isn't it? Many things and usage of library functions भी है, आयो मैंने मैथ आयो स्ट्रीम तो ऑफ कोर्स है ही। बातें करें भाई एंड में जी जी, तो ये ऑलरेडी अपलोडेड आपके LMS पे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो ऑलरेडी होते हैं। ओके, थोड़ा सा हम पैराडाइम को अगर चेंज करें कि लास्ट टाइम हमने कई दफ़ा ये प्रोग्राम कर लिया कि अभी आपने जीरो से स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, वी गॉन अप टिल 100 विद अ स्टेप साइज ऑफ 2, isn't it? We have added the numbers. We started from first student, we have gone to 50 student, taken marks of every individual, got the average. तो अब मैं आप सबको क्विज के मार्क्स की जगह कहूँ कि ये एवरेज है जी, तो आप क्या सेटिस्फाई हो जाएंगे? हर स्टूडेंट को अपने मार्क्स चाहिए, कोर्स इन एवरी कोर्स, इन एवरी क्विज, इन एवरी असेसमेंट इन जनरल। अब आपको टास्क दिया गया है कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिकॉर्ड करें और उसको डिस्प्ले करें। कितने वेरिएबल्स बनाएंगे इस क्लास के लिए? एक ही बनेगा। एग्जिस्टिंग नॉलेज में बताएं, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका उस पर आंसर दें, या फिर आगे जा रहे हैं। देखिए एक किस तरह, एक स्टूडेंट है, उनके मार्क्स हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट में उसी वेरिएबल में मार्क्स अपडेट करने हैं, वो तो ओवरराइट हो जाएगा, टोटल थोड़ी करने हैं। हर स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए मुझे अलग-अलग, तो ये तो कह रहा हूं मैं आपको एवरेज डिस्प्ले कर दूं, अप टिल सम एक्सटेंट इट्स ओके, एवरेज आ गई, बट स्टूडेंट मार्क्स देयर इंडिविजुअल मार्क्स, students have their individual registration number, passengers have their unique ticketing system, every book in the library has its own identification number, isn't it? तो ये चीज किस तरह इंप्लीमेंट होगी कि जितने स्टूडेंट्स उतने वेरिएबल्स, नेचुरली 50 students declare 50 students variables, S1, S2, S3, S4 and go on up till S50। इसके अलावा कोई सोल्यूशन है जी आपको माइंड में क्या आ रहा हो? इसका मतलब कि जो सी इन है ना, जो करेंगे मार्क्स, ठीक है, उसके इक्वल हम कर देंगे स्टूडेंट्स। तो फिर लूप चलता है, क्या आप सेव करेंगे उन मार्क्स? हमें एक्चुअली मेमोरी क्लाउड के अंदर हर स्टूडेंट मार्क्स चाहिए, ये बात को समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने आंसर दे रहे हैं ना, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, इट्स नॉट द केस। वी हैव अ मेमोरी, हर स्टूडेंट रैंडम असाइन कर दें, ये फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, या इकट्ठे कहीं पढ़े हो, बट एटलीस्ट कहीं सेव हो। तो ये जो जितनी लोकेशन है ये तो उतने वेरिएबल्स हैं, isn't it? इस तरह स्केल होना चाहिए। तो आप नेचुरली भी बात है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही आपको वेरिएबल चाहिए, isn't it? ऑफ द सेम डाटा टाइप कह लें, इंटीजर कह लें, तो उसके लिए एक प्रोविजन C++ में दी गई है। वी हैव अ प्रोविजन इन C++ दैट जस्ट बाय राइटिंग इंट स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स 50 semicolon, it will reserve 50 spaces in the memory for you. Declare हो गए, you don't need to declare individual variables
S1, student 1, student 2, student 3. Rather, you have written just one line. Reserve 50 spaces for me in the memory, consecutive 50 spaces. They will start from 0 and they will go up till n minus 1. So just by writing this line, 50 spaces of similar data type. This is the key. This is the compulsion. This is the requirement that at least every variable over here should be having same data type. तो आपने क्विज के मार्क्स करने हैं, जो सेव आप करेंगे इंटीजर ही होगा, isn't it? वो तो हमारा प्रॉब्लम ही है. We know we want to save integer for every student, but just by writing this, we have saved, we have rather declared, we have reserved actually 50 spaces in the memory of same data type, continuous spaces with a difference of +1 from each other. 0th, the student की वैल्यू आ जाएगी, let's say marks 7, 9, 10. ये स्टूडेंट 0 है, उसके ये मार्क्स है, फर्स्ट है उसके ये मार्क्स है, सेकंड है ये मार्क्स है, so on and so forth. The way of organizing the data, we have organized our data in the memory, is generically called data structures. It is one of the structure in which we have organized our data, and particularly this structure is called an array. इसको आप array कहते हैं. Similar entities saved together consecutively at consecutive memory locations. सेव तो होगी लेकिन आउटपुट अगर हम कराने 49 अभी तो सिर्फ डिक्लेयर हुआ है. So far you have just done this thing. int x. That's it. We have just done this thing. We haven't initialized anything. We have just declared it. We have yet to see how to initialize, how to get input from the user, how to display the contents, and further how to do the manipulation. First point was how to declare the variables, so many in number. So this is just about one class. What if we have two classes? How many variables? 100. जी, अगर सारे डिपार्टमेंट्स हो जाए, कितने स्टूडेंट जान, तो आपने एक ही लाइन लिखनी है, जस्ट मेक 50 to 500 रिजल्ट. तो इसको हम देखते हैं आगे. Arrays is one of the data structures. In computing, we definitely have heard this. What is data structure? The way of organizing the data. This is one way of organizing the data. And what could be another way? This is one way to save it in this linear format. This could be another way. What is this data structure? Tree. Save the content in this. Even Google use this type of tree while we make searching. जी, उसको हाफ कर लेते हैं, सर्च टाइम मिनिमाइज हो जाता है, and further because we know जो let's say 10 है, 10 से higher data इस side पे होगा, 10 से lower data इस side पे होगा. So if we have something less than 10, we don't need to search the whole thing. We will just search this part. Tree. It is another data structure. In the same memory cloud, what if students are scattered? Student 1, student 2, student 3, student 4, student 5. Okay? What if students are scattered? We will just link them up. It's called linked list. It's another data structure. So trees, arrays, queues, these are data structures, way of organizing the data. Way of organizing the data. And array is one of them. It's a static entity, its size is fixed. It remains fixed throughout the tenure of the program.
neither grows nor shrinks, fixed. Whatever you have done. Now, if it is fixed, can it be dynamic? The answer is yes. In advanced programming, we will see dynamic data structures. But for this time, for next upcoming weeks, it's a static data structure, arrays. Conjective group of memory locations. It is just like a colony. Real world example. एक कॉलोनी होती है, उसका नाम क्या होता है? इसी के अंदर लेट से ये है वो कॉलोनी, इसमें हाउसेस प्लेस है, एक ही टाइप के लोग रहते हैं, नाम क्या है कॉलोनी का? ठीक है, जिस पर भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हर एक का हाउस नंबर डिफरेंट. So it's like the same colony we have reserved in the memory area. समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Same name and type. It could be characters. To refer to an element, a particular element को किस तरह refer करें? इसका नाम तो student है. बात नहीं करेंगे, ये तो student है. आप शानूर, उधर बैठ. आपको कुछ अच्छे मार्क्स आए हैं. सेम नाम एंड टाइप. टू रेफर टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट, आपने उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम लिखना है. जी, आपने उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टूडेंट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट नंबर 30, typically semicolon, C out, उसकी वैल्यू सीन करने उसमें वैल्यू चली. Means how to refer to a particular element, the name of the structure along with the value. Location, student 2, second floor, student of 0. We normally pronounce it as, in formal terminology, student subscript 0. Student subscript 29. Student of 0, student 0, student 1, normally just pronounce it like that. So, to refer to a particular element, name of the array and its position. First element it has position 0, C of 0, C of 1, C of 2, and going up till C of n minus. So the last element will be at the last location. For example, आप कर दें C of 0 equals to 3. आपने डाटा बनाया, एरे क्रिएट किया, int C equals to, एरे क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसमें इनपुट करते हैं, just like this, int C of 12, and afterwards C of 0 equals to 0. तो इससे क्या होगा? 12 एलिमेंट्स का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है with the name C. C of 0 equals to 3. What will happen? This way. Assign it. It is just like integer x equals to 3. जो हम नॉर्मली अभी तक करते आए हैं, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दें. सब्सक्रिप्टिंग भी हो सकती है. We have something inside subscript 5 minus 2, it will of course equate to C of 3. Sir, increment also हो सकता है. अच्छा, इस केस में देख लें. So how many elements are there? What is the size of C? 12. What is the name of this array? C. What is this location? 0, 1st, 2nd, 4th. Every location has same name because they all belong to the same colony of integers and with the name C, but having different memory locations. Houses have different numbers. So at this location, now these are the contents. Inside that ये values हैं. ये वो कह लें आपके 12 स्टूडेंट्स ने क्विज दिया, ये उनके इंडिविजुअल मार्क्स हैं.
We can save them over here. So we don't need to declare 12 variables. I have just written C of 12. This much array has been created of similar data type, and we will input the contents. Just like integer, we can have any type of arrays. Int C of 10, array of 10 integers. Just write float D or double D. This much, it will create array of 3284 elements. You don't need to declare that much number of variables. Just write it this way. So, if you want to declare more than one array of similar data type, just like integer, if we want to write int a comma b comma c, the c is used over here, what is b? Using a comma separated list. Likewise, arrays can be created. Int b of 100, x of 27. Int 45 mechanical a of 46, 45 mechanical b of 43. Good. So हम क्या create होते हैं, and I can of course save the record in this. तो आपको array की creation और declaration ये समझ आई कोई बात? How they are declared? Yes. And after declaration, what is the impact on the memory? How they actually look like logically? They start from 0. Arrays always start from 0 and goes up till n minus 1. Okay? Now next is their further manipulations. The ones we have declared, how to input the content. One way is to directly input C of 0 equals to 3. But we will see, interestingly, we have other mechanisms as well. Why not put array into the loop? C of I and put I in the for loop. Can you imagine that? हो सकता है ना? जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर का. ठीक है? C of अभी आपने किया is C of 0 equals to 3. तो 0 में 3 आ गया. What if मैं लिख दूं C of I equals to I into 2 और फॉर लूप लगा दूं. जस्ट आइडिया दे दो. पॉसिबिलिटी हो सकती है सॉर्ट ऑफ. तो इसमें भी हम आएंगे नेक्स्ट टाइम. अभी आप देख रहे हैं एरे डिक्लेरेशन मींस आप इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं. इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, इनिशियलाइजर लिस्ट और सेकंड मेथड इज यूजिंग लूप. ये लूप की मेथड डिस्कशन कर रहे हैं. तो पहले हम इनिशियलाइजर लिस्ट देखते हैं. यू हैव क्रिएटेड एन एरे n ऑफ साइज 5 एंड जस्ट लाइक you give the initializer to this x equals to 10. How to do this in case of arrays? We do this just like that. Created n of 5 elements of type int equals to 1, 2, 3, 4, 5. Curly brackets close, semicolon. After writing this line, what is the state of the memory? Let's see that. N of 5. The name of the array is n. 0, 1, 2, 3, 4. 0 till 4. 1, 2, 3, 4. Here is the memory. Declared and initialized. If you want to initialize it yourself, initialize it using initializer list. Every individual element will be initialized. What will happen this? If I write this way, equal to 0. Equal to सिर्फ इसमें 0 होगा और बाकी में क्या होगा? ये इनिशियलाइजर लिस्ट में तो कहते हैं हर एलिमेंट हमने दिया तो व्हाट इज ओनली 0? जब सिर्फ 0 होगा तो लिखा है ऑटोमेटिकली. अब आपने नेक्स्ट टाइम लिख करके बताना है
सर ये ब्रैकेट की वजह से होता है। ये जो ब्रैकेट जीरो है, इट विल इनिशियलाइज एवरीथिंग टू जीरो। सर तो सिर्फ ब्रैकेट में डाल कर तो सिर्फ 5 का 0 जाएगा। नहीं, फिर तो सिंटेक्स की वायलेशन कर दिया आपने। ये अरे व्हाट इफ इंटीजर 5 10 लिख दूं मैं, जीरो से तो आप कह रहे हैं सामने जीरो आ जाए, वो भी आप इम्प्लीमेंट करके देखें जीरो आता है नहीं। व्हाट इफ 10, क्या मैं बताने में नेक्स्ट लेट्स सी, जब जीरो है तो सब में जीरो आ रहा है, तो 10 से बात तो लॉजिकल बन रही है, सब में 10 आ रहा है, तो लेट्स सी। अगर आप कहेंगे सर पहले डिस्प्ले करना तो सिखा दो, एरे को डिस्प्ले कैसे करेंगे? हाँ ये पहले हमने देखा हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, नाउ वी हैव सीन हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। Initialization have two methods. Initializer list we are discussing at the moment. Next comes using looping. Then we will see how to display the contents. And then this will end the factory paradigm of this data structure. So even if we are writing something over here like that, we have given the initializers. Even if we haven't written the size, it will compute the number of initializers. And it will create the array of this much size automatically. If you are not writing the initialize length of the array, size of the array आप नहीं mention कर रहे, fine, but give the required initializers, उतना ही array create होगा। So everything over here is possible. काफी हो गई जी, ज़्यादा हो गया। चलिए इसको अब यहाँ पर होल्ड करते हैं ताकि आप लोग पहले एरे की इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन उसको समझ सकें। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ सिंपल वेरिएबल। वो एक ही वेरिएबल था, आप उसमें अगर नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स रहते ओवरराइट हो जाता। मोटिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, इजंट इट? सो इफ यू वांट टू सेव दोज मार्क्स, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सॉल्यूशन? क्रिएट 50 वेरिएबल्स. It might be possible for some time instance, but what if as a faculty I am teaching multiple students and I have to keep the record of every student individually, not only the averages. So the solution is the data structures. An array is one of the data structures and it has of course prime utility in programming paradigm, as you have seen. क्यों जी, कुछ समझ आया जी? Any query question? ठीक है, रेस्ट इज प्रैक्टिस। तो काइंडली वो